Good evening, folks. Mayuresh Joshi from the MarketSmith India team and the entire MarketSmith team is here. Vakar Khan, Ruchit Sejpal and Kongari Rajshekhar. You guys guessed it right. आज मंगलवार है और मंगलवार को हम हमेशा लेके आते हैं स्टॉक ऑफ द वीक। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मार्केटस्मिथ इंडिया की रिसर्च टीम ने स्टॉक ऑफ द वीक चूज किया है एलिकॉन इंजीनियरिंग। अभी जैसे हम हर हफ्ते करते हैं, ये कंपनी की खासियत क्या है, व्हाट डज द कंपनी डू, व्हिच सेक्टर डज इट बिलोंग टू, इसकी स्पेशलिटी क्या है, हाउ इज इट प्लेस्ड विद इन द सेक्टर, ये सब फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ कैसे रह रही है या प्रोजेक्शंस क्या है ये अर्निंग्स ग्रोथ को लेके, इसके भी डिस्कशंस होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैंसलिम के पैरामीटर्स पे ये कंपनी कैसे उभर के आ रही है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू आई लैंड इट ओवर टू वकार हु विल डिस्कस विद ऑल यू गाइस कंपनी है क्या, करती क्या है, कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है। ओवर टू यू। Thank you, Mayuresh. So very simply, the company is into power transmission and material handling equipment. अगर simple शब्दों में बोले तो जो industrial grade gear boxes रहते हैं, ये वो बनाते हैं। इन gear boxes का application कहाँ का है, अगर हम देखेंगे तो बहुत diverse applications है. So it is into steel, power, cement, and अगर हम एक बहुत important अगर एक company की बात करें तो they are the only company that has the capability to manufacture gearbox for defense, that is the Indian Navy, and it is one of the largest gear manufacturers in Asia. अगर इंडिया में अगर हम इनकी मार्केट शेयर की बात करेंगे so it's around 39%. Across the globe they are delivering products, not just in India but across the globe. अगर हम कुछ साल पहले देखेंगे तो इनका concentration regarding India ज़्यादा था, but now they have subsidiaries in US, Europe, Russia and प्योर ग्लोबल ऑपरेशंस। अगर हम देखेंगे तो इनका रुशिद विल डिस्कस इट इन फर्दर डिटेल्स, बट ओवरऑल जितने ऑर्डर्स आगे आ रहे हैं वो अभी आउटसाइड इंडिया से भी ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल नो हाउ एज वेल। अगर हम इनके क्लाइंटेल के बारे में बात करें सो वेरी elusive and very prestigious set of clientele अगर हम देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटिश स्टील, हेली, टेट्रा पैक, अडानी, एलटी, एनएमडीसी, सेल, बीएचईएल। सो जितनी भी डाइवर्स इंडस्ट्रीज की हमने बात की है उनमें सारे जो लीडर्स है उन्हें ये गियर बॉक्सेस सप्लाई करते हैं, एंड नॉट जस्ट वंस ऑफ बट जो पोस्ट सेल्स या आफ्टर मार्केट रहता है उसमें भी इनका काफी अच्छा योगदान है। सो ओवर टू यू, बैक टू मनीष। परफेक्ट। तो हमने समझ लिया कि एलिकॉन करता क्या है, स्पेशलिटी क्या है, कौन से स्पेशलाइज्ड सेगमेंट को बिलोंग करता है और ग्रोथ पैरामीटर्स क्या है। तो मैं रुशिद की तरफ जाऊंगा, लैंड इट ओवर टू रुशिद। रुशिद, फाइनेंशियल नंबर्स कैसे रहे हैं, ईपीएस रेटिंग जो हम मापते हैं फाइनेंशियल नंबर्स के हिसाब से, ये हिस्टोरिकली कैसे रही है, कुछ फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस मैनेजमेंट दी है तो वो कैसा है? यस, तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक अच्छे CAGR वाली कंपनी हम चूज करते हैं और इसमें भी वही है। अगर लास्ट 4 years का आप रेवेन्यू CAGR देखो, दैट इज अराउंड 23%. If last 4 years EBITDA CAGR you look at, that is around 37%. And the good part is the margin, which was like in 2021, 22 around 17-18%, is now being stable around 24%. So that is something very positive for the company, along with the good revenue growth. Now, if you look at the recent quarter, the Q1 numbers might not be that interesting because there was a 5% degrowth in revenue in the Q1, but the management told that was mostly due to the election season, and they will be able to catch up with the revenue growth over the next few months. And so they have given a guidance which they continue to be of 15% revenue growth in FY25 and 25 to 27% EBITDA growth, and margin will be around 24%. That is what they have guided for. If you look at the other fundamental parameters, the ROE, so ROE has expanded from around 11-12% 3-4 years back to now around 28-29%. So that is also a decent growth. Debt to equity is 0.04%, very negligible. तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ इफ यू लुक एट द गोल ऑफ डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, जैसे वकार बात कर रहा था, इनका एक्सपोर्ट में मार्केट बढ़ रहा है. सो अभी दे आर around 35% in export, but in the next 4 to 5 years they have a target of a 50% revenue mix from the export market. So, and there the margin is even better, so they will be continuously able to maintain a margin at a certain good level. And yes, they have a robust order book of around 950 crore. Perfect.
तो वकार से हमने कंपनी के बारे में समझा, इंडस्ट्री, रुचित से हमने समझा कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स कैसे प्लेस्ड है कंपनी के, एंड इट लुक्स ऑन अ वेरी सॉलिड फुटिंग. बट कैंसलिम के पैरामीटर्स पे क्या ये कंपनी इज इट पासिंग द लिटमस टेस्ट, क्या खरी उतर के आ रही है? लेट्स डिस्कस दैट. राजशेखर, इज Elecon fulfilling most of the parameters that we look at from a CANSLIM perspective? Yes, Mahesh, it is fulfilling most of the parameters. First, what we like about the stock is the base formation. Currently, it is forming a stage 2 cup base pattern, and the base formation has been very idle. If you look at the price volume action during the base formation, the volume dipped almost negligible. So that is mainly because of not much participation from institutional investors. This is what we want whenever the stock is consolidating in any base pattern. The volume should dip, indicating not much activity from the big players. And when the stock came near the pivot, that is right side of the base formation, has been also very good. The accumulation has happened. If you look at a couple of bars previous to on the last week, we have seen good accumulation happening. And the stock is currently trading very near to the pivot. In the today's trading session, it went above the pivot levels, but on the closing basis, it failed to close above the pivot. And if you look at the ratings, ratings have been very good. ROE, that is EPS strength, has been very good at 89. Despite recent quarter earnings, the expectations and the historical earnings have been very good. That is the reason EPS is at 89. Return on equity is also very good. It has improved from levels of 10 to 12 to 23%, as Rishit has also talked about it, which is also showing very good prominence in the company's operational strength. Technical parameters are slightly on the undervalued, if you say, because RS rating has been consolidating around the 60 to 70 range. But as soon as the stock breaks out, that will also tend to improve from here. ABD rating is very good at B minus. So most of the parameters are fulfilling. Number of funds section has also seen a very good improvement. Recent quarter, there has been 18% of growth in terms of number of funds as well as share held by the funds, which shows that good accumulation has happened in this stock, especially from the institutional investors. Overall, on chart wise and ratings wise, it is looking very good. Pivot is around 716 level, so 0 to 5% is ideal buy range. So you can start accumulating as soon as the stock trades in that level. Perfect. We've discussed everything, right from the sector dynamics, company dynamics, financial numbers, and the canceling parameters as well. And the stock is looking good on all these parameters. So ये stock को बिल्कुल आपके watch list पे रखें. This is MarketSmith India Stock of the Week. Please press the bell notification for watching more videos. Follow us at MarketSmith India for many more such videos. Till we meet the next time. Thank you, Vakar, Rushit, and Rajshekar. Till we meet again. Thank you.